Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, assume that the potential energy of a hydrogen atom in its ground state is zero. Then the energy in the first excited state will be dash. So here the key concept is Bohr's model of atom. Bohr's model of atom. So as we know, जो total energy की फॉर्मूला है that is minus 13.6 z square divided by n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और इसमें हम z square की जगह 1 पुट कर सकते हैं बिकॉज ये हाइड्रोजन एटम है. तो बेसिकली दिस फॉर्मूला बिकम्स minus 13.6 divided by n square electron volt, or we know that total energy is the half of potential energy, 1 by 2 multiplied by potential energy. So then potential energy, if we write the expression for potential energy is equal to 2 multiplied by total energy, that is 2 multiplied by minus 13.6 divided by n square electron volt. ये है इसकी expression. So अगर हम n is equal to 1 that is the ground state and n is equal to 2 that is the first excited state, इन दोनों के लिए ये values determine करें, then this is ground state and जो दूसरा है that is first excited state. So ground state के लिए जो potential energy होगी that will be 2 multiplied by minus 13.6 divided by 1 square, 2 multiplied by minus 13.6 divided by 1 square, that is minus 27.2 electron volts, minus 27.2 electron volts. और जो second first excited state के लिए इसकी जो value होगी that will be 2 multiplied by minus 13.6 divided by 2 square, that is 2 multiplied by minus 13.6 divided by 4. So यहाँ से ये cancel हो जाएगा and this is equal to minus 6.8 electron. So this is minus 6.8 electron volt. Now जो second case है ये था first case. जो second case है that is given in the question, उसमें क्या है, potential energy of the hydrogen atom in its ground state is 0. So this is second case और इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू 0. सो इसको 0 कैसे करना होगा, जो ग्राउंड स्टेट में जो नॉर्मली एनर्जी लेवल होती है उसमें उसी के वैल्यू ऐड करने से वो 0 हो जाएगी. सो वी कैन राइट minus 27.2 electron volt plus 27.2 electron volt and this is equal to 0. So जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी minus 6.8 प्लस 27.2, बिकॉज हम 27.2 ऐड कर रहे हैं, minus 6.8 प्लस 27.2 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू माइनस, सो दिस इज 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो सेकेंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में दैट मीन्स n इज इक्वल टू 2 लेवल पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन and I hope you understood the concept well. Best of luck.